Now, while the courts are hearing the Gyanvapi contentions of Hindu and Muslim sides, the provocations and incitements continue unabated. In a mass mobilization, the Jamiat Ulema-e-Hind has congregated 5,000 clerics at Deoband to deliberate over the Gyanvapi tussle. Now, in this, a provocative speech has been fired from the chief, where he claims that India has become a living hell for Muslims. Now, this incitement was echoed by some sections of the Congress as well, while the BJP asks why provocators have no trust in the judiciary. Times Now confronted the provocators. Listen in to what they had to say. What was the reason behind your passionate speech and saying that we are weak and we are helpless, but we will not bow down? देखिए, एक बात है कि वो हेल्पलेस होना एक अलग बात है। बात ये है कि मुल्क में एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है कि एक कम्युनिटी को डिमोनाइज किया जा रहा है। तो डिमोनाइजेशन का जो ये प्रोसेस है, इसको विरोध करना। सर, ये आपका पर्सनल एनालिसिस है सर, और ये कितने दिन से आप इसके ऊपर अगर सालों से बात है, सालों की बात है। ये आपका जो कमेंट है सर, बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया सर। सर AIMIM ने सर आपको क्रिटिसाइज किया सर, कैसे आपके ऊपर रिएक्ट करेंगे? वो मैं उसको मैं Let me go across to my colleague Mayank, who is joining me on the broadcast. Mayank, जहाँ तक ये स्टेटमेंट की बात है, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के जो चीफ हैं, उनका कहना है कि कम्युनिटी को डिमोनाइज करने की कोशिश की जा रही है, और हमें पता है कि ये मामला अभी कोर्ट में इसके ऊपर सुनवाई भी चल रही है। तो क्या वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फेस कर रहे हैं ऐसा स्टेटमेंट देने के बाद? देखिए, उन्होंने बहुत स्मार्टली इस तरीके से अपने कमेंट को सोसाइटी के बेस पे रखा है that there has been divisive policy in the society that has made the life hell for the Muslim, and they can't breathe freely. He has not yet commented on the judiciary, and that is a smart move, you can say. And on the issue of Gyanvapi Mosque and also on the Eidgah Mosque, so I would like to point out that there will be resolution that will be coming out by 1 p.m. Today, when this 2-day session is set to end, and then only we can say that what is the official stand of Jamiat Ulema-e-Hind on the issue of Gyanvapi Mosque and Eidgah Mosque. But before that, all the spokesperson of Jamiat were played smartly that they did not comment directly on the judiciary and whether the judiciary was acting against the Muslim community. But yeah, they latched on to the government and all the policy makers for making what they call atmosphere of hatred and where Muslim community is being demonized in the country. All right, Mayank, please stay with us. I'll come back to you. Now let's also listen into what the provocation exactly was. थोड़ी तकलीफे रसन, फिर थोड़ी सी तकलीफे दार। थोड़ी तकलीफे रसन, रसन कहते हैं कैद को। थोड़ी तकलीफे रसन, फिर थोड़ी सी तकलीफे दार। उसके बाद है दोस्तों, आराम ही आराम है। अपनी ही बस्ती में हमसे, अपनी ही बस्ती के लोग, अपनी ही बस्ती, आज तो ऐसी हालत हो गई है, अपनी ही बस्ती में हमसे, अपनी ही बस्ती के लोग पूछते हैं कौन सी बस्ती के हो, क्या नाम है। अजनबी बना दिया। मुल्क का तसव्वुर, बात एकता और अखंडता की बात करते हैं, देश के अखंड भारत बनाने की बात करते हैं, और मुल्क के मुसलमानों का रास्ता चलना दुश्वार कर दिया। वो कौन सी अखंडता, किस अखंड भारत की बात कर रहे हैं? इसीलिए मैं उनको दोस्तों से कहता हूं, आप मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। प्लीज वापस पलट के देखिए आप क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं। Now, on the other hand, the Congress too has echoed the Maulana, saying the situation in India isn't conducive for Muslims. Listen in. पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि भारत के अंदर जिस तरह से भेदभाव हो रहा है, जिस तरह से एक समुदाय विशेष के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। जमात उलमा वो संगठन है जिसने पाकिस्तान बनाने के विरोध में फैसले लिए। मोहम्मद अली जिन्ना के खिलाफ अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो वो जमात उलमा थे।
तो ये एक नेशनलिस्ट संगठन है, बहुत ही यूँ कहा जाए कि राष्ट्रीय संगठन है। और जब उनको भी इस बात की तकलीफ है तो समझना चाहिए सरकार को। What Mr. Mahmood Madani, the president of the Jamiat Ulema-e-Hind, has said is not only his feeling, but the feeling of all right-thinking people of the country. Naturally, the feeling is there in all Muslims that they are being targeted, and particularly the lynching on various issues it cannot happen in a really secular and democratic country. देखिए, देश के हालात को लेके जो मदनी साहब की चिंता है, हम समझते हैं वो हर एक भारतीय की चिंता है। जिस तरीके से हिंदू और मुसलमान को मंदिर और मस्जिद के नाम लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, और मदनी साहब ने अगर इस बार ये बात कही है कि नफरत को प्यार से जीता जा सकता है, हम देश को नहीं टूटने देंगे, तो हम समझते जो भी देश में हिंदू और मुसलमान को साथ रहने की पैरवी करेगा, नफरत को प्यार से जीतने की बात करेगा, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी है। Now, Mayank, coming back to you, the kind of statement that was being given by the cleric over this issue, which is currently being heard in the court, at a time when we need to maintain utmost caution, we have Congress also who has come forward echoing this same notion. Well, as has been the case in the past as well, every statement has been, taken as per the perception and what they want to project. So every political party have, swapped on to this opportunity after the statement given by Maulana Madni, and they are, addressing to their voter base, their, what they believe is the ideology that they follow, and that's why, you have seen that, this statement has created a political slugfest among all the politicians across the party line. So the thing is that what makes this speech by Maulana Madni special, because this is a 2-day delegation meeting of Jamiat Ulema-e-Hind, and Jamiat Ulema-e-Hind is a very historic organization of the Muslim community. It was started in 1918 and played a significant role in the independence of the country. So this organization has significant sway over the the narrative of the Muslim community in the country, and that's why any political party except for the BJP do not want to criticize the Jamiat on the face value, looking at these statements, because they don't want to look like condemning whatever these Jamiat spokesperson are saying on the ground, because that will make them look like against the Muslims and criticizing and denying the claims that were made by Jamiat. Right, Mayank, please stay with us, because let's also dip into some reactions from the BJP, which has come forward and lashed out at the Islamophobia narrative that is being built. सब सच्चाई को जाने, सही को जाने, और उसके बाद डायलॉग से या कोर्ट से इन सब चीज़ों के लिए न्याय प्राप्त करें। कहीं जमीयत भड़काए, कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भड़काए, कहीं PFI भड़काए, कहीं पर पार्टियां उसको और भड़काएं, कहीं पर और तौकीर रजा या ओबैसी भड़काए। मैं उनसे कहूँगा कि वह सब ये भड़काना बंद करें। In the name of Jalsa, once again, there is an attempt of doing Desh Jalana with the kind of provocative, communally loaded and insightful statements made by the Jamiat Ulema-e-Hind at Deoband by Mr. Madni, who says nafrat ka bazaar hai, who says Musalmanon ke sabr ka imtihan liya ja raha hai, who says that there is an attempt to defile and denigrate those Muslim rulers including Aurangzeb, who says that there is Islamophobia being spread. Mr. Madni should answer that is a court order on Gyanvapi spreading Islamophobia. This Bhadkao Bhaijan competition is on, and therefore time and again insightful fear-mongering statements are made. ये देश सभी के लिए सुरक्षित है
और जो लोग भय का भौकाल और भ्रम का भूत खड़ा करके अपने किसी तरह के निहित स्वार्थों को पूरा करना चाहते हैं वो सफल नहीं होंगे। क्योंकि जहां तक सवाल है, कोई मैटर कोर्ट में है, कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। आप भय का माहौल पैदा करके, भ्रम का माहौल पैदा करके समाज के सौहार्द के ताने बाने को नहीं तोड़ सकते और किसी को इजाजत भी नहीं दी जा सकती इस काम के लिए। This is an incorrect argument. It may be a political argument. It may be an argument of convenience. It may be an agenda of a leadership. That is for them to answer. But the same people perhaps would like to speak maybe about the PFI, which has such blatant misuse of Islam, that speaks about violence, gets innocent children to have hate against other religions. That is phobia against another religion. Not a word on that.